In this module, we will talk about nanocoating applications and we will learn about responsive nanocoatings, superhydrophilic nanocoatings, and some superhydrophobic coatings. And at the last, we will discuss the surface engineering for mechanical enhancement of cell shield by the nanocoating applications. So the current applications for the nanocoating technology are in categories of electronics, lifestyle, life sciences, filtration, and energy, and military and institutional. So these are the different disciplines like electronics, life sciences, filtration, and some etc. in which the nanotechnology finds the applications for the nanocoating. So the important area of the applications of nanocoatings is tribological coatings. And in nanocoating technology, the tribological coatings are very important. Now, what about the tribological coatings? The tribology is the science and technology of interacting surfaces in relative motion. Tribological properties include friction, lubrication and wear. So the tribological जो properties हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं? Friction है, lubrication है and some wear properties हैं. Tribological coatings are those coatings that are applied to the surface of a component in order to control its friction and wear. Tribological coatings जो हैं biological coatings ये ऐसी coatings हैं जो ऐसी surface पे apply की जाती हैं ताकि हम उसकी friction और wear properties को control कर सकें. In this area, the term thin films is used as an alternative to the nano coatings. So in nanotechnology, हम नैनो कोटिंग की बजाय थिन फिल्म्स को भी के वर्ड को टर्म को यूज करते हैं एज एन अल्टरनेटिव टू नैनो कोटिंग्स. Traditional materials used in coatings for tribological applications are carbides, cemented carbides, metal ceramic oxides, nitrides and carbon-based coating. So conventionally in coatings में to achieve the tribological applications जो materials use होते थे उनमें carbides, cemented carbides, metal ceramic carbides और some carbon-based coatings शामिल हैं. Responsive nanocoatings. In responsive nanocoatings, the properties of the material in the coating react to the environmental condition. So जो properties हैं material की वो react करती हैं according to the environmental condition. कि environmental condition क्या है? जैसे कि light है, heat है और coating जो है वो कैसे act करती है इन surfaces के ऊपर either in a passive or an active way. These coatings allow the properties of submaterials to change, such as glass, by conferring new or improved properties. So in responsive coatings, the material of the properties has been changed. Like अगर हम glass पर coating कर रहे हैं तो वो glass की जो properties हैं वो change हो जाएंगी या वो improve हो जाएंगी existing properties या उसमें some new properties induce हो जाएंगी. The use of glass is very common in modern buildings since it allows the construction of transparent and seemingly lightweight structure. We know that the glass is used in buildings for the construction purposes because of its lightweight structure. So low E coatings are a type of passive nanocoating since the properties of the layers are undisturbed during its operation. Another class of coatings used in glass are those often described as dynamic or smart coating. So ग्लास के अंदर डिफरेंट या ग्लास के ऊपर डिफरेंट तरह की कोटिंग्स की जा सकती हैं जिसमें they have also introduced some dynamic or smart coatings or low E coatings. So due to the excessive use of glass, different types of coatings can be done on the glass to improve or to induce some new properties in that material. Smart coatings can also be passive in the sense of changing their optical properties due to change of external temperature. So smart coatings जो हैं वो भी passive हो सकती हैं. कैसे? Because their optical properties of that coating material change due to influence of the external temperature or the light. So another example of nanotechnology applied to smart coating is the use of family of wavelength selective films for manufacturing heat mirrors. So this is another example of manufacturing heat mirror is
in nanotechnology is of smart coatings. One of these material is indium tin oxide as infrared absorber, and the example for the smart coating in this application is the indium tin oxide, which is an infrared absorber. A 300 nanometer indium tin oxide coating on glass provide more than 80% transmission for the wavelength predominant in sunlight. The another type of the coating is SuperHydrophilic coating. So the photocatalytic coatings commercialized as self-cleaning glass which use the catalytic properties of titanium dioxide. Actually, the another name for the superhydrophilic coatings can be the photocatalytic coatings, and it can be known as the commercialized as self-cleaning glass due to the catalytic properties of titanium dioxide. Actually, the theory is that the titanium dioxide nanoparticles are a type of nanoparticles which have water repellent and self-cleaning property. When the titanium dioxide is coated into a material, the material become you can say the self cleanable material which can be commercialized for the different purposes. So what is the basic mechanism for the titanium dioxide coating to achieve the self cleaning property? In actual, when the titanium dioxide nano coated material is irradiated with the UV light, the coating becomes super hydrophilic, and due to this super hydrophilic property, the rainwater adhere to the glass providing the self cleaning. So the rainwater जो है वो ग्लास के साथ चिपक जाता है या adhere कर जाता है और उसको self cleaning property देता है. सो जो एक कमर्शियल एग्जांपल जो हमें मिलती है जो कि कमर्शलाइज नैनो कोटिंग के थ्रू एक मटेरियल है, दिस इज अ पिलिंगटन एक्टिव के नाम से ये एक ग्लास है विद अ फोटोकैटालिटिक कोटिंग दैट रेंडर्स द मटेरियल इजियर टू क्लीन, जो कि मटेरियल जो है ये इजीली क्लीन हो जाता है. Super hydrophilic coatings are also useful for rendering a surface fog resistant. So super hydrophilic coatings के जरिए जो एक surface है वो fog resistant है, यानी उसके ऊपर fog नहीं आएगी. The famous example is of, you can say, the side mirrors of a car in foggy season और winter season. जो fog आ जाती है, जो साइड मिरर होते हैं कार के, अगर अब उन कार्स के मिरर पर जो है वो नैनो कोटिंग्स की जा रही हैं जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, ताकि उनको हम फॉग रेजिस्टेंट बना सकें और वो क्लियर इमेज दें इवन इन द फॉगी और रेनी वेदर. So same example can be applied to the dental mirrors that dentist use for its during surgery. कि डेंटिस्ट जब यूज करता है डेंटल मिरर तो उसके ऊपर फॉग आ जाती है, तो उन डेंटल मिरर्स के ऊपर अब कोटिंग्स की जा रही हैं, नैनो कोटिंग्स, ताकि वो फॉग रेजिस्टेंट हो सकें. सो द सर्जरी एक्सपेरिमेंट कैन बी quick and can be more efficient as compared to the conventional treatment. So substances that can be used as anti-fog agents include surfactants, hydrogels, hydrophilic nanoparticles and colloids. Different substances हैं, hydrophilic nanoparticles हैं, hydrogels हैं, and even some colloids. They can be used as anti-fog agents, and these materials can act as to coat the different surfaces like mirror, or you can say the dental mirror. The anti-fog agent creates a thin film that does not allow the formation of water droplets but rather forces the water molecule to spread on the surface. अब एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है कि एंटी फोग एजेंट जो है ये एक थिन फिल्म प्रोवाइड करते हैं या क्रिएट करते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट को उस सरफेस के ऊपर खड़ा नहीं होने देती. वो ड्रॉपलेट जो है वो मूव कर जाता है या स्प्रेड हो जाता है उस सरफेस के ऊपर. तो इससे दो प्रॉपर्टीज मिलती हैं कि एक तो फॉग नहीं आएगी एंड दूसरी बात है कि उस सरफेस को सेल्फ क्लीनिंग मिलेगी क्योंकि वाटर जो है वो उस सरफेस पे स्लिप कर जाएगा. So another type is of hydrophobic, super hydrophobic coatings. Nano coating is hydrophobic, water repellent, oleophobic, oil repellent surface layer that repels water, oil, dirt and other dry particles. Now, as the name indicates that if we coat a material with some super hydrophobic property,
what will happen that any dirt or oil or water on that surface will be easily repelled by that coating application. So high hydrophobicity, eco-friendly nano coating can be applied onto objects to make them waterproof for the long term. चीज़ों को waterproof बनाने के लिए उनके ऊपर eco-friendly and high hydrophobic जो nano coatings हैं वो apply की जा सकती हैं. The opposite to superhydrophilic coatings are superhydrophobic coatings. Superhydrophobic coatings जो हैं ये बिल्कुल बरक्स हैं सुपरहाइड्रोफिलिक कोटिंग्स के, उसके ऑपोजिट हैं. विच टोटली रिपेल वाटर, वो वाटर को एब्जॉर्ब एडहेयर करके सरफेस को क्लीन करते हैं और ये वाटर को रिपेलिंग प्रॉपर्टी देते हैं. द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन दीज सरफेस हैव वेरी हाई कॉन्टैक्ट एंगल्स एंड बीड अप फॉर्मिंग नियरली स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स. Superhydrophobic coatings have surfaces that mimic the surface found in the lotus leaf and are being developed for many applications that require resistance to dirt and ease of cleaning. अब superhydrophobic coatings जो हैं उनके ऊपर ऐसी सरफेस होती है जो मिमिक करती है लोटस लीफ के ऊपर जो सरफेस पाई जाती है. We know that on the lotus leaf the water is easily repelled and no dirt can be applied on that surface. So इस आइडिया को डिवेल्प करके ऐसे मटेरियल डिजाइन किए जा सकते हैं जो कि डर्ट या रेजिस्टेंट होंगे और उनकी क्लीनिंग जो है वो इजीली हो सकती है. In this diagram you can see this surface is without nano coating and the surface roughness is about 5 micrometer, but when we coat with some nano material or a thin film is made, the surface roughness is reduced to 1 micrometer for better dirt repellent. उसकी roughness increase हो गई है, so जो dirt है वो easily repel हो सकती है, water easily repel हो सकता है और उसकी cleaning जो है वो easy हो सकती है. So this is another diagram. You can see that if we coat this glass with some nano materials, तो जब हम इसके ऊपर आप you can say कि dirt apply करेंगे तो वो easily remove हो सकती है, या water जो है अगर इस surface के ऊपर rain water है या कोई और water डाल रहा है तो वो easily उसको repel करेगा और वो water जो है उसके साथ उस surface के साथ stick नहीं करेगा. So it's a self cleaning glass system based on titania thin film coating कि titania से इसको coat किया गया है. This is a solid surface. This is an example of hydrophobic system based on silicone oxide coated surface के सिलिका के साथ surface को coat किया गया है. So देखें the contact angle has been changed which will give it the water repellent property कि water repel करेगा उस surface से क्योंकि it is a hydrophobic system. So the last is the surface engineering for the mechanical enhancement of cell sheet by nano coating. Surface engineering के through mechanical enhancement जो है वो increase हो सकती है cell sheet की nano coating technology के through. Cell sheet technology is becoming increasingly popular in tissue engineering and regenerative medicine. Actually cell sheet technology है, this is a very popular technology in regenerative medicine and in tissue engineering application. Due to integrity into versatile organ and manageable cell and tissue type from the bank and no needs of large volume organ for transplantation. एक्चुअली जो टिश्यू इंजीनियरिंग में कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि आपको बैंक से टिश्यू लेना पड़ता है या मैनेज करना पड़ता है सदर टाइप ऑफ सेल और ट्रांसप्लांटेशन के लिए, नाउ द नैनो कोटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू सेल शीट, सिंथेटिक सेल शीट और इवन सिंथेटिक स्किन बना ली गई है जो कि रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज रखती हैं ड्यू टू द नैनो कोटिंग एंड नैनो मटेरियल प्रॉपर्टीज. Cell-based therapy and tissue engineering are widely used in regenerative medicine. Three-dimensional biodegradable polymer scaffolds seeded with cells have been used for the regeneration of various host tissues, including bone, skin, cartilage, and heart tissue. जो three-dimensional biodegradable polymer scaffolds हैं, वो सीड कर दिए जाते हैं इन सेल शीट्स के साथ और वो डिफरेंट टिश्यूज, बोन्स और मसल्स की रीजनरेशन में इन्वॉल्व है.
However, artificial polymer scaffolds can lead to inflammatory responses and pathological fibrosis. But now there are some other limitations जो कि that are associated with these scaffolds or polymers कि वो inflammatory responses cause कर सकते हैं, and body can recognize them as a foreign particle, और some pathological fibrosis जो है वो initiate हो सकती है. The another one is that the excessive connective tissue formation के बहुत ज़्यादा connective tissue की formation हो सकती है, और insufficient cell seeding की वजह से ये भी एक additional limitation है scaffolds की in regenerative medicine. But now scientists are working on it to minimize that limitations. Another technology, or you can say another technique, which is a layer by layer assembly of nanometer scale film coating method, was introduced to interplanar cell sheet for multi-layer cell sheet and single cell before sheet formation. Now, as I mentioned that scientists are working on different another techniques to overcome the limitations. सो लेयर बाय लेयर असेंबली जो है इसके थ्रू जो है वो कोटिंग इंट्रोड्यूस की जाती है बड़ी कंट्रोल्ड एंड ऑप्टिमाइज कंडीशन में बिफोर द शीट फॉर्मेशन. LBL self-assembly technique is a widespread method of thin film fabrication that is based on alternate immersion into solutions of interactive materials. ये बड़ी एक अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी या टेक्निक है थिन फिल्म बनाने के लिए है, जिसमें इंटरैक्टिव मटेरियल्स या सॉल्यूशंस के साथ उसको इमर्ज किया जाता है, और इस इमर्जन के थ्रू जो है वो हम थिन फिल्म जो है वो फैब्रिकेट करते हैं, जो कि ऑप्टिमाइज्ड होती है टू ओवरकम दैट लिमिटेशंस दैट वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड. Nanofilms with collagen and alginate increase mechanical property of cell sheets without altering cell functions, viability and proliferation. अब कुछ नैनोफिल्म्स हैं जो कि कुछ नेचुरल मटेरियल हैं या यू कैन से सम सिंथेटिक मटेरियल हैं, जैसे कि कोलाजन है, एल्जिनेट है. ये क्या करते हैं, सेल शीट की जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस करते हैं, और वो and when they enhance the property they don't disturb the cell functions, cell viability and even cell proliferation. So this integration with biological materials to cell sheet has still room to be controlled with defined molecular layer into nanometer scale. Now this property or this integration with biological materials, कि जो biological materials इस coating एप्लीकेशंस या कोटिंग प्रॉपर्टीज के थ्रू बनाए जा रहे हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू इन नैनोमीटर स्केल थ्रू डिफरेंट फैक्टर्स एंड डिफाइंड मोलेकुलर लेयर्स. As regarding that, oxygen transportation is limited due to sheet thickness and its permeability after in vivo transplantation. हम शीट को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक और रिक्वायर्ड लिमिट तक अपना फंक्शन परफॉर्म करे, जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल दी गई है कि वो लिमिटेड होती है शीट की थिकनेस की वजह से और उसकी परमिबिलिटी की वजह से. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नैनो कोटिंग दैट we can coat according to our desire and can achieve our attained application for a limited time, for a limited span, or for a limited area, in a limited area, either inside the body or inside a material. You can say in life sciences we can say the in vivo transplantation. The LBL assembly not only allows for nanometer scale control over film thickness but also can be performed on virtually any kind of substrate, even cell membrane. Now this is a good advantage of the LBL assembly technique, that you just film thickness के लिए अलाउ नहीं की जा सकती, बट के जो LBL assembly है, this technique can be used on any kind of substrate. ये किसी भी substrate, कोई खास substrate इसके लिए नहीं है, बल्कि ये किसी भी substrate पर अप्लाई की जा सकती है. इवन के सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर भी लेयर बाय लेयर असेंबली की टेक्निक को अप्लाई किया जा सकता है. Through the LBL technique, multifunctional films can be manufactured. हम multifunctional films बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं कि लेयर बाय लेयर है, कि एक लेयर डिफरेंट फंक्शनैलिटी की हो एंड अनदर लेयर इज डिफरेंट फंक्शन हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटी. सो मल्टी फंक्शनल फिल्म्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम डाइवर्स मटेरियल्स
and such as polymers, proteins, nanoparticles, and therapeutics. Different nanoparticles, different proteins, different therapeutic agents, उनके थ्रू हम जो लेयर बाय लेयर टेक्निक के थ्रू मल्टी फंक्शनल फिल्म्स बना सकते हैं जिनकी डाइवर्स एप्लीकेशंस हो सकती हैं इवन इन लाइफ साइंसेस. थैंक यू.